Assalamu alaikum students. We are continuing our series of lectures. This is the third lecture and the topic is projectile motion. This is first type of projectile when we fire an object from ground obliquely, or we can say that when we fire an object from ground making an angle theta with horizontal. This is the first type of projectile. In the last lecture we discussed how can we find the velocity after time t and how can we find displacement after time t. Today, as you have already seen the title of this video, we are discussing some important terms, that's time of flight, maximum height and horizontal range. Let's start our today's. We have to find time of flight, that is denoted by capital T. देख लो, पहले ये डिराइव इसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो इट्स डिफाइंड एज द टाइम टेकन by the particle or by the projectile in describing the path OAB is called as time of flight. तो मैंने यहाँ पे दिखाया ये जो ऑब्जेक्ट है दिस शोन बाय रेड कलर, हमने इसको ओब्लिकली थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u. तो ये क्या, ये इस पाथ से जाके ग्राउंड पे फिर वापस आके B पे स्ट्राइक कर लेगा. एट पॉइंट B इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड अगेन. तो ये पाथ कितने टाइम में इसने ट्रैवल किया, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हम अब टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालेंगे कैसे, या इसके बाद जो हमने पढ़ना है मैक्सिमम हाइट को निकालेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालेंगे कैसे. ये चीज़ हम सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे. मोशन अंडर ग्रेविटी में होता क्या था, दैट मोशन वाज सिंपली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. और अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पर भी जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहती है थ्रू आउट द मोशन. दैट मीन्स वी कैन से दिस टाइप ऑफ मोशन आल्सो एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो हम यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? देयर वर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी वेक्टर्स. सेकेंड s इज इक्वल टू u t प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर. थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. हम ये तीन इक्वेशंस वहाँ पे यूज़ करते थे और यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अब अपने आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर सकते हैं सेपरेटली फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. देख तो अगर जब मैं ये ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये एक तो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मोशन कर रहा है. ओ से ए तक जब जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली इसने ओ से सी डिस्प्लेसमेंट करी और वर्टिकली इसने ओ से, सपोज दिस पॉइंट इज डी, ये ओ से डी तक गया है. तो हम ये मोशन को दो सेपरेट मोशंस में पढ़ेंगे, दो सेपरेट पार्ट्स में पढ़ेंगे. वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन, सेकेंड इज वर्टिकल मोशन. अब अलोंग हॉरिजॉन्टल जो है इनिशियल वेलोसिटी इज ux and the acceleration is along y, negative y axis. That means along x axis it is 0. The component of acceleration is 0. That means ax is 0. And vertically initial velocity is uy and acceleration along y is minus g, it's downwards. So we can use these three equations as we can find vx, velocity at any time along x axis, that's vx is equal to ux plus at. Here ax is 0, that means we can write it vx is equal to ux. Second, this will be sx, that displacement along x axis is equal to ux t plus 1 half of axt square. Ax is 0, that means whole term will be 0. And third term, and third equation, v square, it will be v square is equal to u square, that's same as that of first. So in vertical motion we can say vy is equal to uy minus gt. Second, sy is equal to uyt minus 1 half of gt square. And third will be v square y minus u square y
is equal to 2g s along y, that's minus g. So we can use these three equations, sorry, these 5 equations, these 3 and these 2 equations, for calculating these time of flight, horizontal range, maximum height. So first we are going to calculate time of flight. The formula for time of flight. For time of flight, which is noted by t, what is this time? It is the time used to describe this path OAB. So when a body goes from O to B, the total displacement along y-axis is 0, because point O and point B, they have same y coordinate. That means displacement along y is 0. So we can use this equation, Sy is equal to uyt minus 1 by 2 gt square. So Sy displacement in y is 0 from O to B. We can write 0 is equal to uyt minus 1 by 2 gt square. Here हम t को कॉमन निकाल सकते हैं, uy minus 1 by 2 gt is equal to 0. इधर t is equal to 0, एक तो हम t को 0 लिख सकते हैं, दूसरी वैल्यू ये पूरी टर्म 0 के बराबर, दैट मीन्स uy is equal to 1 by 2 gt. तो t की वैल्यू यहाँ पे निकली 2 uy divided by g. We can also write uy as u sin theta, because it is ux is u cos theta and uy is u sin theta, we know it. That means time period is equal to 2 u sin theta divided by g. First value is t equal to 0. This value corresponds, this t equal to 0 corresponds to the point O. जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं पॉइंट O से, तब भी डिस्प्लेसमेंट इसके अलॉन्ग y 0 है. दैट मीन्स t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इज 0, डिस्प्लेसमेंट इन y इज 0, एंड t इक्वल टू t इक्वल टू 2uy डिवाइडेड बाई g पे भी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y इज 0. तो हम अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कंसिडर करेंगे? इस वाले को. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. डिनोट, अब इसको कैपिटल T से हम डिनोट कर लेंगे, कैपिटल D से डिनोट करेंगे. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सप्रेशन फ्रॉम टाइम ऑफ फ्लाइट. ये भी है, अगर हम ऐसे याद रख सकते हैं, दैट्स t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन अलोंग y, दैट्स 2uy by g. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर horizontal, sorry, maximum height. Maximum height, it is denoted by h. From the diagram, AC is the maximum height, the particle which the particle gained through its motion. So we have to find, actually we have to find AC. This is h. So how can we find it? If we move here, the velocity is in this direction, v. So it has two components, one along x, this is vx, one along y, this is vy. But here at A, the velocity is only along x-axis, velocity along y is 0. At A, velocity along y is 0 because it's not moving upwards. So it's just same as when we throw an object upwards, and at the maximum height the velocity was 0. That's same here. So we can take vy here at A, vy is 0. So from that equation, at point A, velocity along y is 0.
we have to find h, that is displacement in y, ac is displacement in y. So we can use this third equation, that's v square minus u square is equal to as, or we can say v square y minus u square y is equal to minus 2g h. We can use this equation. So that is v square y minus u square y is equal to minus 2g, that will be h, displacement in h. So this will be 0 minus u square y is equal to minus 2gh. This is minus u square y is equal to minus 2gh, minus minus, that means h is equal to u square y divided by 2g, or we can say that this is 1, we can say that h is equal to u square y, we can say u square sine square theta divided by 2g. This is the maximum height. This is the expression for maximum height, which also depends on uy, that's vertical initial velocity, the component of initial velocity along vertical. And the last is horizontal range, or we can simply say range, denoted by capital R. What is range? Range is the maximum displacement along x-axis, or the distance along x-axis, or horizontally the distance between initial point and final point, that's called range. It's the distance, this OB, simply the distance OB. So this is the displacement along x-axis. So displacement along x-axis can be found by this, sx is called ux into t. We know ux, simply it's u cos theta. What is t here? It's the time body takes, time taken by the body from O to B, and this is the same as that of time of flight. So body takes the time from O to B is the same as we have calculated time of flight. So we can write here range R is equal to ux into capital T, that's time of flight. So range is equal to ux is ux t u 2 uy sin theta, here 2 uy divided by 2 uy divided by g, that's 2 uy divided by g. So we can write range is equal to ux uy divided by g. ऐसे भी याद रख सकते हैं, या हम वैल्यू देंगे ux और uy की, दैट्स u cos theta and u sin theta. So range will be equal to u cos theta, u sin theta divided by g. This will be range is equal to u square sin theta cos theta divided by g, u square 2 sin theta cos theta is a formula, so we can write it as sin 2 theta. 2 sin theta cos theta can be written as sin 2 theta divided by g. This is the expression for range. So we can calculate range by this formula, either this or this. So here range depends on both ux, that's initial velocity along x-axis, as well as initial velocity along y-axis, but height, maximum height, it depends only on uy, and time of period it also depends on uy, but range depends on both. That means range depends on initial velocity, that's u. Now there are two important points regarding the range of a projectile. First, for a given value of u, we have to fix the value of initial velocity. For a given value of u, for both the cases we have to fix the value of initial velocity. Suppose a body is projected with 30 meter per second, so we fixed it as 30 meter per second. Then the range will depend on angle of projection theta, as u is constant, g is constant, so range depends on theta. So when this range will be is maximum, so we have to find the angle when range is maximum. So r max, it depends on
sine 2 theta. So sine 2 theta, if sine 2 theta is maximum, then r max will be maximum, that's r max. तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. सो साइन 1 कब होता है? व्हेन एंगल इज 90 डिग्री. दैट मीन्स 2 थीटा इज 90 डिग्री. दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो r इज इक्वल टू r max व्हेन थीटा इज 45 डिग्री. तो तब हम कह सकते हैं कि r जो है मैक्सिमम है. जब हम इसमें थीटा की वैल्यू 45 देंगे तो r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 into 45, that's sin 90, that's 1, that's divided by g. That will be r max. This is the value of r max. So we can say that if we put the value of theta 0, so range will be 0, that's sin 2 into 0, that's 0, range will be 0. At theta equal to 0 degree, range will be 0. If we increase the value of theta from 0 to 45, range will be from 0 to at 45 its maximum. From 45 to 90, if we put theta equal to 90 degree, it will be 2 into 90, that's 180. Sin 180 is again 0, then it will be again 0 degree. So range is increasing when theta increases from 0 to 45, that's angle of projection is increased up to 45 degree, theta range increase. And if it increase the angle of projection from 45 to 90, range starts decreasing. So this is the first important condition, that is first important point, that range is maximum when theta is 45 degree. So now second, यहाँ पर भी हमने u की वैल्यू जो है वो गिवन जो होगी वही फिक्स्ड है. ठीक है, u इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u. तो हम सेकंड को ऐसे समझेंगे. सपोज मैं कहूँगा कि एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया और उसकी मैक्सिमम रेंज जो है, दैट मीन्स थीटा एट थीटा को 45, उसकी मैक्सिमम रेंज सपोज मैं कहूँगा मैक्सिमम आर मैक्स जो है उसका दैट इज़ 20 मीटर्स. इफ़ आर मैक्स इज़ 20 मीटर्स तो हो क्या रहा है उसमें, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इस इक्वेशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उसकी रेंज भी 0 ही होगी. एट थीटा इक्वल टू 45, दिस इज़ आर मैक्स, दैट मीन्स इट्स एट 45, दिस इज़ 20, एंड 90 पे फिर से 0 मीटर्स. ठीक है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है 0 से 20, 20 से 0, अगर हम 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर लेंगे इट्स रेंज विल बी 0. फिर अगर हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेंज भी 0 से इंक्रीज होती है 1 2 3 अप टू 20. फिर हम 45 से वापस 45 से लेके 90 तक अगर हम एंगल इंक्रीज करेंगे, फिर से इसकी जो रेंज है डिक्रीज होगी 20 से 19 18, ऐसे ही लास्ट पे फिर से रेंज इसकी 0 आ जाएगी. तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन कर लेगा कि व्हेन इज़ द रेंज 15 मीटर्स, तो इस ऑब्जेक्ट की जो रेंज है 15 मीटर्स कौन से एंगल पे है. ठीक है, 15 मीटर्स की रेंज 15 मीटर्स कौन से एंगल पे है. तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 0 से 20 तक भी एक जगह पे 15 मीटर की रेंज होगी, और 20 से 0 तक फिर से कहीं पे कोई एंगल पे इसकी रेंज जो है 15 मीटर्स होगी. तो ये 15 मीटर्स जो रेंज है ये एट टू एंगल्स होगी. ठीक है, 0 से 45 डिग्री के बीच में भी एक एंगल ऐसा है जहाँ पे रेंज 15 होगी, और 45 से 90 तक भी एक एंगल ऐसा है जहाँ पे रेंज 15 होगी. जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेंज 0 है जो है वो दो जगह पे, एक तो 0 डिग्री पे और 90 डिग्रीज पे. ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम रेंज जो है ना एक ही एंगल पे होती है, बाकी जो भी रेंज होगी मैक्सिमम और 0 के बीच में वो दो एंगल्स पे होती है. अब वो दो एंगल्स हम ढूंढेंगे. वो दो एंगल्स होते क्या है, एक तो होता है फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज इज सेम, रेंज इज सेम. तो हम इक्वेशन वही इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला u स्क्वायर साइन 2 थीटा. सो इफ एन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू एंगल थीटा, तो उसकी रेंज जो होगी वो होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी फॉर ऑब्जेक्ट 1.
object projected at an angle theta। तो दूसरा जो होगा, अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, तो वहाँ पे रेंज होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बदले 90 माइनस थीटा। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा divided by g. This will be u square sine 290, that's 180 minus 2 theta divided by g. So this will be equal to range equal to u square sine 180 minus something is equal to, this is second quadrant, this is 180, this along this at x-axis, so we can say that it will be second quadrant. In second quadrant sine is positive, then we can say that it as sine 2 theta. The trigonometric ratios sine cos, they are not changing when it's at 180 degree, so that will be sine u square sine 2 theta divided by g. This was the range, this is the object range of object projected at 90 minus theta at an angle 90 minus theta. So here the range of these two objects, one object was thrown at an angle theta and this object was thrown at 90 minus theta, so the range of these both objects are same. So we can say that for a given value of u, range at theta and 90 minus theta are equal. So suppose example, we have to calculate range for theta equal to 20 degree and theta 1 is 20 degree and theta 2 is 70 degree. We can say that range for 20 degree is equal to range for 70 degree, because theta, they form complementary angles. This is theta and this is 90 minus theta, or this is theta and this is 90 minus theta. Theta is 20 degree and 90 minus theta means 90 minus 20, that is equal to 70 degree. So range for these two angles will be same. Similarly, range for 30 degree is equal to range for 60 degree, provided the initial velocity for both the projections will be equal. Thank you.